अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। इंट्रोडक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 साइलेंट फीचर्स है। इसमें नेचर, यूनिकैमरल लेजिस्लेशन, फेडरल सिस्टम था, पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ये रिटर्न फॉर्म में था, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी थी, फंडामेंटल राइट्स थे, राइट ऑफ मिनोरिटीज थे, सुपरमेसी थी ऑफ लॉ, इस्लामिक लॉ की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, नेम ऑफ द कंट्री थी, इस्लामिक प्रोविजन थे, लेंथी कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन था, पार्शियली रिजेक्ट था और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में था, डायरेक्ट इलेक्शन थे, इसमें इंडायरेक्ट इलेक्शन ख़त्म कर दिए गए थे, सिंगल सिटीजनशिप थी, कंक्लूजन। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वजूद में आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 adopted as an interim constitution was changes made to meet the requirements of new state of public of Pakistan. Constitution 1956 का था। Constitution 1956 was put in March 2007 and was abrogated because it could not operate smoothly. Silent feature of the Constitution of 1956. The silent features of the Constitution are as under. Nature. The nature of Constitution of 1956 is fundamentally British. नेचर में तो क्या था, फंडामेंटली ब्रिटिश था। ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थी। द सेंट्रल लेजिस्लेचर कंसिस्टेड ऑन वन हाउस ओनली विच वाज कॉल्ड द नेशनल असेंबली। No second house was there. Federal system. According to the constitution, the federal system was introduced in the country. Parliamentary system. The constitution of 1956 provided parliamentary form of government. The prime minister enjoyed more people than the president. Written form. The constitution of Japan is written form in the consist 13 chapters, 234 section and 5 schedule। यानी कि इसके 13 चैप्टर थे, 234 सेक्शन थे और 5 शेड्यूल थे। शेड्यूल मतलब 5 बाब कह सकते हैं, 5 पार्ट्स, और 5 पार्ट्स में 13 चैप्टर्स का जैसे, और सेक्शन टॉपिक 234। Freedom of judiciary. The Constitution of 1956 recognized the independence judiciary. The Supreme Court of Pakistan was entitled to explain and interpret the Constitution. Fundamental rights. Fundamental rights of the people was granted in the Constitution, and these were to be protected by the courts of law. Rights of minorities. The Constitution 1956 protect the right of the minorities so that many perform their religious obligation freely. Supremacy of Islamic law. In the Constitution of 1956, Sharia was declared in the basis for legislative system of Pakistan. Directive principle of state policy. The Constitution laid down certain directive principles state policy for the guidance of the government. They would serve simply as ideals which the state should strive to achieve. Emergency powers of the Parliament. In the Constitution of 1956, it was the direction of the President to declare the emergency. Emergency declare कर दी गई थी, situation थी। Official language Urdu and Bengal was made official language in Pakistan. It was also declared English to remain as an official language for a maximum period of 25 years. Name of the country Islamic Republic of Pakistan in the Constitution of 1956. Islamic provision क्या था? The objective resolution was included as a preamble of the constitution was the state's religion. Lengthy constitution था, 1956 was very lengthy one. The reason for its being lengthy was the framer not only frame the fundamental practice principles but administrative details were also given. The partially rigid. The constitution of 1956 is partially rigid and partially flexible. The method of amendment was not difficult नहीं थी। 1956 जो पार्शियल था फ्लेक्सिबल था, इसका अमेंड किया जा सकता था। डायरेक्ट इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 द मेथड ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन वाज अडॉप्टेड इन द कंट्री। सिंगल सिटीजनशिप. देयर वाज ओनली सिंगल सिटीजनशिप इन द कंट्री। सिंगल सिटीजनशिप मतलब दोहरी शख्सियत हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान की नेशनलिटी उसका साथ साथ किसी और कंट्री की नेशनलिटी नहीं रख सकता। एक ही नेशनलिटी रख सकता है, या पाकिस्तान की, या सऊदीया, या एनीवन किसी और कंट्री की। देयर वाज ओनली सिटीजनशिप इन द कंट्री। तो कंक्लूजन क्या था? द कंक्लूड आई कैन से दैट द कंक्लूजन ऑफ 1956 was enforced in 23 March in Sapar के enforced किया था। provided parliamentary form of the government. It was a republic in the character president was elected in the joint session of National Assembly and provincial assemblies.
द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड ऑन, ये एब्रोगेशन ख़त्म हो गया था ऑन October 8, 1956 बिकॉज इट कुड नॉट ऑपरेट इन कंट्री। आज की वीडियो हमारी यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।